Hello, you're watching Northeast Express on HornbillTV. At least 2 civilians were injured after gunfire was reported from multiple locations in parts of Ukhrul and adjoining Kamchong district, triggering fresh tensions across the foothill belt of Manipur. Officials and local organizations said, according to a press statement issued by the Central Working Committee of the Tangkul Naga Foothills Organization, CWC, TNFO armed elements allegedly opened fire from several points, including along the Chasat-Kamchong axis and areas such as Shankai and Mongkot Chepu. The injured have been identified as Rechang Longleng, 22, and Ringwei Ramror, 34, both residents of Shrakapung village in Kamchong district. The village is located along National Highway 202, India, on the Imphal-Ukhrul road between Shankai and Mongkot Chepu. In its statement, the organization alleged that the firing targeted Tangkul Naga villages including Kamchong, Sarkapung and Doye. It further claimed that Kuki militants operating under the suspension of operations SO agreement were involved in the incident. The TNF also expressed concern over the reported use of sophisticated weapons and questioned the effectiveness of security deployment in the area, stating that such incidents occurred despite the presence of central security forces. Calling the situation a serious threat to peace and stability, the organization urged the state government to immediately deploy adequate security personnel in vulnerable villages such as Toye and Sarkapong to ensure civilian safety and restore normalcy. It added that earlier demands, including the upgradation of Litan police station and additional deployment of forces at key locations, remain largely unaddressed, leaving several sensitive areas exposed. Meanwhile, there has been no official confirmation from security agencies regarding the claims made in the statement. The continuing incidents underscore the fragile ground situation along the NH202 corridor, where recurring firing and competition narratives continue to complicate efforts to stabilize the region. Conflicting narratives have emerged following a firing incident reported at Mongkot Chepu village in the Litan area of Ukhrul district of Manipur on Monday afternoon, further underscoring the fragile situation in the foothill region. According to the Kuki CSO Working Committee Ukhrul, the incident occurred at around 1:07 p.m. when villagers, including women, were engaged in agricultural activities at the Lengthei Moel farming area located about 500 to 600 meters from the main settlement. The committee alleged that an armed group opened fire from a hilltop position targeting civilians. The CSO stated that a young girl sustained a bullet injury in her foot during the incident. It further claimed that more than 20 villagers were trapped in the fields for a considerable period amid the firing, exposing them to serious risk, and called for immediate intervention and rescue. However, the Media, Information and Publicity Cell of Central Working Committee of Tangkul Naga Foothills Organization (CWC) TNFO has rejected these claims, terming the CSO's version misleading. In a counter statement, the TNFO asserted that visual evidence strongly suggests that structured digging activity was carried out for the construction of drains and bunkers by Kuki volunteers, reportedly led by Kuki militants along with their women's wing under the suspension of operations SOO arrangement. It was never social work or routine farming as claimed. Multiple bunkers were being constructed above National Highway 202 from where Kuki armed militants have been attacking Tangkul Nagas, the statement added. The TNFO also warned that conflicting and unverified narratives in a sensitive conflict situation risk undermining public trust and could contribute to the creation of misleading perceptions. Meanwhile, there has been no official confirmation from security agencies regarding either version of events, including the identity of those involved or those precise circumstances leading to the firing. Security forces are reported to have rushed to the area and initiated measures to stabilize the situation. The incident once again highlights the volatile conditions in fringe areas of Ukhrul district, where civilian movements, particularly for farming, remains vulnerable amid competing claims and ongoing tensions.
The centre is preparing to introduce key amendments to the Nari Shakti Vandan Abhinyan to enable its implementation ahead of the 2029 general elections, with a significant expansion of Lok Sabha seats also under consideration, sources said on Monday. As part of this effort, the government is launched to be engaging in consultations with opposition parties to build broader consensus. Under the proposed framework, the strength of the Lok Sabha could be increased from the current 543 seats to around 816. Of these, nearly 273 seats are likely to be reserved for women, in line with 33% quota mandated under the law. The Women's Reservation Act, enacted through the Constitution 106th Amendment Act 2023, provides for one-third reservation for women in the Lok Sabha, state legislative assemblies and the Delhi Assembly. However, its implementation has been contingent on the completion of this first census after its passage and a subsequent delimitation exercise, both of which are yet to be carried out. According to sources, the government is now considering amending the law to enable implementation without waiting for these processes. The proposal includes using the 2011 census as the basis for a fresh delimitation exercise, thereby expediting the rollout of reservations. Let's have a look at some political reactions. तो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में लागू होना चाहिए। वुमेन मेक हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया औरतों की है, और जब तक औरतों का पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, राजनीतिक विकास नहीं होता, तब तक औरतों की जो हिस्सेदारी इस संसार में है वो उसकी जो कामना नहीं की जा सकती। तो अगर भारतीय पार्लियामेंट ये कानून लाती है और इसकी अति शीघ्र क्रियान्वयन की कोई प्लान लाती है और इसको ठंडे बस्ते में नहीं डालती है, तो मैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट और बतौर औरतों के अधिकारों की रक्षा करने का एक पुराना योद्धा होने के नाते मैं इसका पूर्ण समर्थन करूंगा। पंजाब में जिस तरह से सुसाइड केस चल रहा है, PWC के एक ऑफिशियल ने सुसाइड किया, जिसके बाद जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उन पर अबेटमेंट का केस बना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, पंजाब में लगातार जब से ये नई सरकार सत्ता में आई है, गैंगस्टर में लगातार बढ़ा है। सिद्धू मूसेवाले के कत्ल से लेकर अब तक दर्जनों खिलाड़ियों के, दर्जनों शहरियों के, व्यापारियों के, सन्नतकारों के वो कत्ल हो चुके हैं, और ये सरकार उसमें नाकाम रही है। और ये जिस तरह जिस सत्ता के नशे में और पैसे के नशे में और ये अहंकार में और जिस तरह एक ईमानदार अफसर को जलील किया गया और उसको अपनी जान लेने में मजबूर किया गया, यहाँ तक कि मिनिस्टर द्वारा उसकी पत्नी जो FIR लिखाई है उसमें उसके परिवार को गैंगस्टरों द्वारा मरवाने की धमकियां तक दी गई। ये बिल्कुल ही एक बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कल हम पंजाब के सांसदों ने ये मुद्दा उठाया था और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पे CBI की इंक्वायरी का हमें भरोसा दिया है, और ताकि ये पंजाब का जो सरकारी जो दमन है और ये सरकार की जो एक गुंडा नीति है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। थैंक यू मैडम। ज़रूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। AIMM के एक नेता ने कहा कि मुसलमानों को जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, गोलबेल चल रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ जाती है या हमारे 100 सांसद भी आ जाते हैं तो हम जो गोली मार रहे हैं उनको गोली मार देंगे, इस तरह का एक। देखिए, वो उन्होंने बोला, उनसे पूछिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता है आज भी और आगे भी। सरकार किसी की भी आए, संविधान सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था है उसी के अधीन चलना चाहिए। है और 2029 के लोकसभा चुनाव में वो लागू भी हो जाएगा, क्या कहेंगे? इसका स्वागत है और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही, जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा, लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और मुझे लगता है आने वाले समय में अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि हमें क्या क्या मांग रखनी है इस बिल में। जो भी इनका ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है कि क्या क्या वो उसमें प्रावधान रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ के, आज हमारी मीटिंग भी थी इसको लेकर, उसमें हम लोग ये तय करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या माइनस करना है, ताकि ये बिल सबके लिए सुविधाजनक हो और सबको इसका लाभ मिले।
Tripura Power Minister Ratan Lal Nath on Monday called for a demolition of alleged unauthorized offices of the Communist Party of India Marxists, accusing the opposition party of encroaching on government land during its tenure. The issue was raised on the concluding day of the budget session of the Tripura Assembly, where land encroachment figured prominently during discussions, according to officials. Responding to a query by CPIM MLA Shyamal Chakrabarti on alleged encroachment in Boxanagar under Sepahi Chala district, Nath said that the administration had already initiated legal and administrative steps to reclaim government land, including action by the sub-divisional magistrate. He alleged that more than 100 kani of government land had been encroached upon during the Left Front's rule, with rubber plantations set up on such land. The minister also sought demolition of unauthorized party offices using bulldozers, stating that the land should be restored for public use. Chief Minister Manik Shah supported the government's position and cited a case in Amarpur under Komati district, where a CPIM office was allegedly constructed on 556 square feet of grass land. He said eviction orders issued in 2018 were later upheld by the High Court after being challenged. The exchange took place amid broader debate on encroachment and land management during the assembly session. গভর্নমেন্ট সাথে সাথে স্টেপ নিয়েছে, এইচডিএম স্টেপ নিয়েছে। একটু বড় দেখলাম বিশাল বড় ঘটনা বলছে, সাথে সাথে গভর্নমেন্ট স্টেপ নিয়েছে। কত খাস জমি আপনাদের সময়, শত শত কানি, আরে রাখেন একটু শুনুন, স্টেপ শুনুন না প্রোগ্রামটা। শত শত কানি দখল করে রেখেছে, এখনো রাবার বাগান করে রেখেছে। শিক্ষার জন্য বলছি, আমি বলছি মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে রিপ্লাই দেয়। অর্থাৎ দেখুন পজিটিভ জিনিস দেখুন, এক 10 দিনের হবে না, আপনি যেমন জানতে চাইবেন উত্তর শুনতে হবে। এখন স্মৃতিচারণ, আরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তো প্রণাম করা উচিত, ঠিক আছে, প্রণাম করা উচিত। স্টেপ নিয়েছে, শত শত কানি দক্ষিণ ত্রিপুরায়, উত্তর ত্রিপুরায় শত শত, শুধু খাস জমি নয়, জুট জমি পর্যন্ত দখল করে রেখেছে। এখন লজ্জা করে না? এখন স্মৃতিচারণ। স্যার একটু রাখেন, স্যার একটু রাখেন, স্যার প্লিজ। স্যার বিশাল বড় স্টেপ নিয়েছে, আরে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্লকের সামনে পরিমর্শকে হত্যা করে ফেলেছে। লজ্জা আছে? লজ্জা আছে? পরিমর্শকে হত্যা হয়েছে দিনের বেলায় ব্লকের সামনে, তাকে স্টেপ নিয়েছে। আচ্ছা ঠিক ঠিক, শিখা উচিত। ছবি কি দেখেন? ছবি দেখেন না, ছবি দেখেন না, ছবি দেখেন না, বহুত ছবি আছে। আচ্ছা সবাই দেখছেন। লিডার হাউস বলবেন, ঠিক আছে, লিডার হাউস বলবেন, হ্যাঁ লিডার হাউস বলবেন, ঠিক আছে, সবাই শান্ত, শান্ত না, লিডার হাউস বলবেন, সবাইকে শান্ত, একটু লিডার হাউস বলছেন, শুনুন সবাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Pradyot Kishore Debraman on Monday ruled out any pre-poll alliance without firm assurances on safeguarding the interest of indigenous people amid speculations of a tie-up between the Tripura Mota Party and the Bharatiya Janata Party for the upcoming Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC) elections. The TTAADC polls are scheduled for April 12, with counting on April 17. Debraman said in a social media interaction that his party would not enter into any alliance without guarantees for the welfare of the indigenous community, adding that his primary commitment remained with the people. He appealed to members of the indigenous community across political affiliations to work collectively for their rights and maintain peace during the election process.
The remarks come amid reports of discussions between leaders of the two parties on a possible seat-sharing arrangement. हेलो फ्रेंड्स, सबको चिबाई। मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं कभी भी अपने लोगों को झुकाकर, कमजोर करके किसी के संग भी मैं अलायंस नहीं करूंगा। आप लोग के दिल में बहुत सवाल है कि बुबागरा अलायंस करेगा कि नहीं करेगा। मेरा अलायंस मेरे कम्युनिटी के साथ है, मेरे दोफा के साथ है, और मेरा अलायंस सिर्फ मेरे जाति के साथ है। मैं कोई भी पार्टी के साथ बिना कोई अश्योरेंस का, बिना कोई अपने तिपरासा अकॉर्ड का फुलफिलमेंट का पूरा ना होने का, मैं बिना कोई गारंटी लेकर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए अलायंस नहीं करूंगा। तो आपको जो बात सुनना था आज आप सुन लीजिए मेरे जबान से। मैं कभी भी अपने लोगों को और अपने कम्युनिटी के साथ, अपने दोफा के साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। बहुत गाली दिया गया, बहुत चीज बोला गया। आज समय आया है मैं अपने पूरे तिपरासा वॉरियर्स को, जो मोथा में है, जो बीजेपी में है, जो सीपीएम में है, जो कांग्रेस में है, जो आईपीएफटी में, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। माई नेम इज प्रद्युत विक्रम मानिक्य एंड आई फाइट फॉर माई पीपल एंड आई नेवर कॉम्प्रोमाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ माई नेक्स्ट जनरेशन। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, पावर है, मेरे पास मेरा गरीब तिपरासा का सपोर्ट है। तो मैं चुप रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। ऊपर में देयर इज गॉड, भगवान है, और भगवान हमें जिताएगा। मेरे गरीब लोग मुझे जिताएंगे, और हम लोग इस आने वाले ईटीसी इलेक्शन में द पावर ऑफ तिपरासा को दिखाएंगे, हानि पुसा का पावर दिखाएंगे। जितना गाली आपने पिछले 6 महीने से हमको दिया है, उसका जवाब हम 12 तारीख को वोट करके 17 तारीख को रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे। जो आपको करना है कीजिए, हम तैयार हैं। टू ऑल माई वॉरियर्स, एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो, क्योंकि ये फाइट पॉलिटिकल नहीं है। ये फाइट हमारा अधिकार का है, ये फाइट हमारा बच्चे का भविष्य का है, ये फाइट हमारा नेक्स्ट जनरेशन का है। एक दूसरे को मारने से बाहर के लोग हंसते हैं। जो गलती पहले हुआ है उसको रिपीट मत करो, वायलेंस में इंडल्ज मत करो, और एक बार पूरे नॉर्थ ईस्ट को दिखाओ कि हमारा संख्या कम हो सकता है, हमारा पॉपुलेशन कम होगा, वी मे बी लेस, बट व्हेन वी आर थानसा वी आर स्ट्रांग, वी आर तिपरा। बेलाइनो हमबाई, ये मेरा मैसेज है। जिसको सुनना है सुन लीजिए, और जिसको पसंद नहीं है वो भी सुन लीजिए। प्रद्युत विक्रम मानिक्य विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज कम्युनिटी एंड ऑन हिज पीपल। बेलाइनो हमबाई, देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा। लेकिन आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, टाइगर जिंदा है, और हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। Two Indian nationals who had been detained in Bangladesh for illegally entry and subsequently served prison sentence were repatriated to India on Monday through the border in Kauai subdivision, officials said. The handover took place around 11 a.m. at the Bala border outpost in the Baharmura area in the presence of personnel from both countries. The process was jointly conducted by Border Guard Bangladesh and Indian agencies, including the Border Security Forces and Tripura Police. According to official sources, the two individuals were identified as Ajit Biswas and Samir Das, both residents of Tripura. They had reportedly crossed into Bangladesh inadvertently in December 2024 while working on agricultural land situated beyond the barbed wire fencing along the border. Bangladesh authorities had earlier arrested them for unlawful entry, and a local court sentenced them to 28 days of imprisonment. However, Indian officials stated that the duo remained in custody for nearly 16 months before being repatriated after completion of necessary legal procedures.
Officials from Kunarogat police station in Bangladesh were present during the handover along with border personnel. On the Indian side, officers from Kowai police and other senior officials supervised the process. A senior police official confirmed that all formalities were duly completed before taking custody of the two individuals who are expected to be reunited with their families soon. এডিশনাল সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট মোহনপুর সাব ডিভিশন আমাদের মোহনপুর সাব ডিভিশনে গোপালনগর একটা জায়গা আছে সেখানে যে আমাদের বর্ডার ফেন্সিংয়ের যে গেট ছিল সেই গেট দিয়ে আমাদের যে গোপালনগরের একজন বাসিন্দা বাকি দুজন রানীর খামার বাড়ি ওদের ওরা আমাদের হেড অফ ফেন্সিং যে ওদের জায়গা ছিল কৃষি জমি সেখানে ওরা গিয়েছিল কৃষি জমিতে নিজের তো সেখান থেকে ওদেরকে যে বিডিআর ছিল তারা ধরে নিয়ে যায় তো তারপর আমরা যখন খবর পাই বিষয়টা আমরা জিএ পলিটিক্যালের সাথে যোগাযোগ করি ফ্রম থ্রু ডিএম অফিস সেখান থেকে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের সাথে যোগাযোগ হয় সেখান থেকে তাদের রিলিজের বিষয়টা আজকে আসে তো আজকে তাদেরকে বিডিআর বা বিজেপি যেটাই বলেন ওরা আমাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে। ওদের নামটা বলুন। নামটা হলো একজনের অজিত বিশ্বাস এবং সমীর দাস, দুজনকে ওরা ছেড়েছে আর একজন এখনো রয়েছে ওদের কাস্টডিতে। ওনার একটু ডকুমেন্টেশনের প্রবলেম আছে, তা ওনার নাম বিভিন্ন কাগজপত্রে একটু অন্যরকম। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.